Hello students, I am Mrs. Rekha Gupta, Assistant Professor from Government VYT PG Autonomous College Durg, and today I am here with my virtual lab course 2 for MSc second semester microbiology, and today I am giving a demonstration of ion exchange chromatography with the following objectives: to learn protein purification by ion exchange chromatography, which involve the following steps. जिसमें पहला है प्यूरिफिकेशन ऑफ लाइसोजाइम बाय यूजिंग सीएम सेलुलोज, एस्टिमेशन ऑफ लाइसोजाइम एक्टिविटी and estimation of protein concentration. As we all know, ion exchange chromatography is one of the type of adsorption chromatography in which separation depends upon the reversible adsorption of charged solute molecules to immobilized group of opposite charges. So, in this type of chromatography, the stationary phase consists of fixed charges on a solid support, and these charges can be either negative or positive. Hence, there are two types of ion exchangers, that is cation and anion exchangers. Cation exchanger possess the negatively charged group and attract the positively charged molecule. The example of cation exchanger is carboxymethyl cellulose or CM cellulose. Conversely, anion exchanger have positively charged group that attract the negatively charged molecule and thus separate the anionic molecule. The example of anion exchanger is diethyl aminoethyl cellulose. As we all know, protein are complex ampholites, so they carry both positive and negative charges and can be separated from a mixture of compound on the basis of net positive or negative charge that they carry. This is the diagram which shows the general principle of ion exchange chromatography. Here we can see it is a column of ion exchange chromatography in which the cation exchanger resin is packed inside the column, which having the negatively charged group, and when we add the mixture of protein which we want to be separated, then the elution process will going on the basis of the net charge on the protein, and this net charge on the protein will depend upon the pH or ionic strength of the mobile phase or the solvent. So here we can see the enlarged view of the column in which the negatively charged bits attract the positively charged protein, okay, and the negatively charged protein flow throughout the column. Isoelectric point of a protein is the pH at which net charge is 0. That means the number of positive and negative charges are equal. Therefore, protein will have either a net negative charge or a net positive charge, and which depend on the pH of the solution. Thus, it is possible to use either an anion exchanger or a cation exchanger. In ion exchange chromatography, a solution containing the protein of interest is applied to the ion exchanger, and protein binding to the ion exchanger is dependent on the net charge of the protein at that particular pH and the ionic strength of the mobile phase. The bound protein is then eluted out from the stationary phase by increasing the concentration of counter ions or by changing the pH, which alter the charges on the protein. The weakly charged protein is displaced from the stationary phase with lower concentration of counter ion than highly charged protein. And this results the separation of protein based on its net charge. Now the extent of purification of protein or enzyme can be determined by the computing its specific activity. And the specific activity is the ratio of enzyme activity to mass of protein in the sample, which is expressed in unit of activity per milligram of protein. As the enzyme is purified, other protein in the mixture are eliminated while most of the enzyme activity is retained. This results in an increase in the specific activity of enzyme. Now this is the picture we show how the separation is going on and कैसे जो प्रोटीन का सेपरेशन है वो मीडिया के या जो सॉल्वेंट के पीएच पर डिपेंड करता है. So there are three different conditions. In first condition we can see that pH of the
solvent or the mobile phase is more than isoelectric point, so there is net negative charge. So the protein will bind to the anion exchanger resin. Now in second condition, that is a equilibrium condition, when pH is equal to the isoelectric point, so there is no net charge, no negative charge or nahi positive charge, so no binding to the ion exchange. In third condition we can see that pH जो है वो isoelectric point से कम है, so where the isoelectric point is more than pH of the mobile phase or the solvent, so there is net positive charge, so protein will bind to the cation exchange. Now we can see that the net charge on a protein is influenced by the pH of its solvent. At equilibrium, when pH is equal to isoelectric point, the protein has zero net charge and therefore will not bind to the cation exchange or an anion exchange stationary phase. So by adjusting the pH above or below the pi, isoelectric pH of the protein will lead to the net charge, and protein binding occurs to either an anion exchange stationary phase or to a cation exchange stationary phase. Now this is the equilibrium condition, जहाँ पर हम देख रहे हैं there is no negative or no positive charge. So at equilibrium, the pH of the solvent is equal to the isoelectric point, isoelectric pH of the protein. So this is the equilibrium condition. In most of the ion exchange chromatography we performed, it is performed in the 4 steps or the 4 stages, जिसमें पहला stage होता है equilibration, second is sample application and washing, and third step is elution, and fourth stage is regeneration. Now these are the requirements: CM cellulose, equilibration buffer, wash buffer, elution buffer, neutralizing solution, sodium chloride, phosphate buffer, test tube for mixing, Micrococcus luteus, that is a bacterial culture, lysozyme, standard lysozyme, and the chromatography column. Now this is the buffer composition, different types of buffer which we use in the experiment. Equilibration buffer, which contain 20 millimolar tris HCl and 200 millimolar NaCl at pH 7.5. Washing buffer contain 20 millimolar tris HCl, 200 millimolar NaCl and 5 millimolar imidazole at pH 7.5. Elution buffer 1, 20 millimolar tris HCl, 200 millimolar NaCl and 20 millimolar imidazole at pH 7.5. And elution buffer 2 contain 20 millimolar tris HCl, 200 millimolar NaCl and 200 millimolar imidazole at pH 7.5. Now these are the some other requirements like centrifuge, spectrophotometer, chicken egg, distilled water, beaker, test tube, column stand, micropipette tips and cuvettes. Now procedure. In procedure, this is the first step of our objective, that is purification of lysozyme using CM cellulose. So जिसमें पहला step है wash the empty column with hot water, fix the column to the stand, remove the top cap and pack the column with 2.5 ml CM cellulose. Remove the bottom cap and equilibrate the column with 50 ml 1x equilibration buffer. Now break an egg and collect the egg white separately. To 6 ml of egg white, add equal volume of distilled water. Mix in the tube for 10 minutes to get a homogeneous solution. Now adjust the pH of the egg white to 7 by slowly adding neutralizing solution. So this is the picture that shows the lysozyme preparation by using the egg white. Now centrifuge the egg white solution at 6000 rpm for 10 minutes. Collect the supernatant. Save 0.5 ml of supernatant for measurement of lysozyme activity and label these as crude sample. Okay. Now rest of the supernatant to equilibrate CM cellulose column. Okay. Replace the top and bottom cap of the column and incubate for 1 hour at room temperature with intermittent mixing.
After an hour, allow the column material to settle. Slowly pipette out or decant the supernatant without disturbing the column. Wash the column with approximately 30 to 40 ml of wash buffer. Elute lysozyme from the column using 15 ml of 1x elution buffer. Start collecting the eluate in test tube as 2 ml fraction and monitor OD at 280 and pull the fraction that show absorbance as 280 that is 0.5 or above and label this as eluate. Okay, now wash the column with 10 ml of 1 molar NaCl and replace the top and bottom cap and store at 4 degree for the future use. So this packed column can be reused then more 2 times more. Okay, now our second objective is the estimation of the protein concentration. तो किस तरह से हम protein concentration measure करेंगे? So first for the crude sample, okay, now dilute the crude sample 20 times with phosphate buffer. So 20 is our dilution factor हो जाएगा हमारा यहाँ पर. Now जीरो सेट करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम यूज करते हैं फॉस्फेट बफर को ब्लैंक के लिए and measure the absorbance as 260 and 280 nanometer. And by using this following formula, we can calculate the concentration of protein in the crude sample. So this is the formula, that is 1.55 into absorbance at 280 nanometer minus 0.77 into absorbance at 260 nanometer into the dilution factor, that is 20, is equal to mg per liter. जो भी हमारा रीडिंग आएगा that is in mg per liter, that is the concentration of protein in the crude sample. So here 1.55 and 0.77 जो है वो अलग जो है that is a extinction coefficient है. Okay, now for इल्यूशन फॉर इलुएट के लिए प्रोटीन कंसंट्रेशन हम किस तरह से मेजर करेंगे? फर्स्ट डाइल्यूट द इलुएट, जो हमने फ्रैक्शन कलेक्ट किया था कॉलम से, दैट इज कॉल्ड द इलुएट. ओके, सो इलुएट को हमने डाइल्यूट किया है 10 टाइम्स विद द फॉस्फेट बफर. तो हियर आवर डाइल्यूशन फैक्टर इज 10. यहाँ पर हमने डाइल्यूशन फैक्टर लिया है 10 और क्रूड सैंपल के लिए लिया था हमने 20. नाउ अगेन हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जीरो सेट करते हैं फॉस्फेट बफर से, दैट इज अ ब्लैंक, एंड देन मेजर द एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर and by following formula we can calculate the protein concentration of protein in the eluate. So this is the formula, absorbance at 280 nanometer into the dilution factor upon 2.55. So the concentration will be in mg per liter per ml. Now the dilution factor की जगह हम रखते हैं 10 and this 2.55 is the extinction coefficient of lysozyme. Okay, at 280 नैनोमीटर. अलग अलग वेवलेंथ पे जो उसका एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है वो स्पेसिफिक होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये कांस्टेंट रखा है. नाउ एस्टिमेशन ऑफ लाइसोजाइम एक्टिविटी, किस तरह से हम लाइसोजाइम एक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे. अभी हम देख रहे थे किस तरह से हम प्रोटीन का कंसंट्रेशन निकाल रहे थे. ओके, सो फॉर एस्टिमेशन ऑफ लाइसोजाइम एक्टिविटी वी डाइल्यूट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जो स्टैंडर्ड हमारा लाइसोजाइम था उसको हम फिर से डाइल्यूट करेंगे 1:3 के रेशियो में, जिसमें हम 0.3 ml हमने स्टैंडर्ड लाइसोजाइम लिया और 0.6 ml जो है फॉस्फेट बफर लिया, और उसका जो कंसंट्रेशन है वो हमने 0.33 mg पर ml तक डाइल्यूट कर लिया. जो हमारा स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन था वो 1 mg पर ml था, जिसको हमने डाइल्यूट करके किया है 0.33 mg पर ml. Now dilute the crude sample and the elevated, जो हमारा सैंपल है उसको भी हम डाइल्यूट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ द कंसंट्रेशन हमारा 1 mg पर ml है तो उसको डाइल्यूट किया 3 टाइम्स विद फॉस्फेट बफर से डाइल्यूट किया और उसका कंसंट्रेशन हमने कम कर लिया 0.33 mg पर ml. नाउ अगेन हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हमें रीडिंग लेनी है, तो हम फॉस्फेट बफर को यूज करते हैं एज अ ब्लैंक फॉर सेटिंग द जीरो. नाउ डाइल्यूट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ, जो हमारा कल्चर है माइक्रोबियल कल्चर, दैट इज अ माइक्रोकोकस ल्यूटियस, वो हम लेते हैं इन फॉस्फेट बफर सच दैट कि उसका जो एब्जॉर्बेंस है इन 450 नैनोमीटर इज बिटवीन द 0.5 एंड 0.7, इतना उसका
जो ओडी है उतनी टर्बिडिटी उसमें होनी चाहिए, उतना अमाउंट हम उसका लेते हैं. Now take 3 ml of this diluted substrate culture in a cuvette and measure the absorbance at 450 nanometer against the phosphate buffer blank. And this is the reading for the 0 second. तो ये reading जो है वो 0 second के लिए होती है. Now to the substrate. अब substrate के लिए हम क्या करें? Add the, ये हमारा जो culture है that is a substrate. Okay, हम इसे add करते हैं इसमें 50 microliter of the standard lysozyme. अब इस कल्चर सबस्ट्रेट में हम ऐड कर रहे हैं 50 माइक्रोलीटर ऑफ स्टैंडर्ड लाइसोजाइम और फिर हम इसे मिक्स करते हैं फॉर द 15 सेकेंड एंड मेजर द एब्जॉर्बेंस एग्जैक्टली आफ्टर 60 सेकेंड ऑफ एडिशन ऑफ द लाइसोजाइम. नाउ फिर से हम यही स्टेप रिपीट करते हैं. 5 to 8 जो है फिर से हम करते हैं फॉर क्रूड सैंपल एंड द इल्यूटेड सैंपल के लिए भी हम यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते हैं और उसकी भी रीडिंग नोट कर लेते हैं. मतलब सभी में लाइसोजाइम जो है उसमें ऐड करके हम उसकी रीडिंग जो है वो नोट करते हैं. सो दिस इज द टेबल जिसमें कि हम 0 सेकेंड 60 सेकेंड में रीडिंग हम ले रहे हैं एट 450 नैनोमीटर स्टैंडर्ड के लिए, क्रूड सैंपल के लिए और इलेवेट के लिए. एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ओडी. कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द डेल्टा ए. Now estimation of specific activity of lysozyme, इसके लिए भी specific formula से हम calculation करते हैं. Specific activity of lysozyme in crude and eluted sample is calculated by comparing the OD reading of the sample with that of standard lysozyme with whose specific activity is known. Standard lysozyme है इसलिए हमें इसकी specific activity जो है वो पता है, that is 48,000 unit per mg. Okay. और यहाँ पर हमने जो डेल्टा ए 450 पे हमने जो उसका डिफरेंस निकाला था ऑफ द टेस्ट एंड द एक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्ड अपॉन डेल्टा ए ऑफ द स्टैंडर्ड पर मिनट ऑफ द स्टैंडर्ड. तो ये जो डिफरेंस हमारा आया है उसे हम यहाँ पर रखेंगे और एक्टिविटी जो हमारी स्टैंडर्ड की एक्टिविटी है उसे हम यहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसके थ्रू हम स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं. नाउ द प्रिकॉशंस, कुछ जरूरी प्रिकॉशन जो हमें ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इज यूज अ क्वार्ट्ज क्यूवेट टू मेजर एब्जॉर्बेंस एट 260 and 280 nanometer. Mix the CM cellulose column material gently to make a uniform suspension before packing. Each packed CM cellulose column can be used for maximum 3 times only. Do not let the column go dry. उसे कभी भी हम ड्राई नहीं छोड़ना चाहिए. Bring the reagent to the room temperature before dilution and dilute the required amount of standard lysozyme just before use. जब हमें जरूरत है तभी हम उसे डाइल्यूट करते हैं स्टैंडर्ड लाइसोसोम को. ओके, ताकि उसकी एक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहे. Now these are the references. And thank you for watching and listening. Thank you.